Hello students, good morning. Anyone please tell me my voice is clear? Very good. So students, this is first class for me. So first of all, welcome you all and good morning. Myself, Dr. Mukesh Kumar Kumawat. I had joined APJ Satya University on 27th April. Little bit about me. I have completed my PhD and M.Pharm from Dibrugarh University, Dibrugarh, Department of Pharmaceutical Sciences, Assam. PhD in 2016 and Mass M.Pharm in 2008. I have completed my B.Pharm from Department of Pharmaceutical Sciences, Mohanlal Sukhadiya University, Udaipur, Rajasthan. I have 13 years of teaching experience. So this is a little a short introduction about me. So I will discuss with you about pharmaceutical chemistry second. So students, you are diploma students, let me know about your teaching, that mode of, you can say, medium of teaching is English or something else, means mixed with Hindi, and what is the teaching methodology? Can you tell me? My English is understandable because I am using very simple sentences. I think it is okay. Yes, sir. Okay. 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 So we can start our discussion with English language in a very good communication, I can say. Uh, Another thing I want to say, if you feel any problem, please let me know. Anything is there, you can tell me. This is our first lecture. That's why I don't know how many syllabus has been covered in your class or not. So what happened today? I have started a basic class, that is nomenclature of organic compound. Please let me know that how many topics have been covered in your class and what is the status about your syllabus. कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि कितना सिलेबस हो चुका है आपका, प्लीज, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड? जैसे एनीवन कैन टेल मी, बता सकते हैं कोई भी? स्टूडेंट्स, मैं आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हैं कितना सिलेबस आपका हो चुका है? सर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है सर, कुछ अच्छा। टॉपिक रह रहे हैं अभी, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिक। यस सर, ओके। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अच्छा, ठीक है। और कुछ? चलिए फिर नेक्स्ट सर क्लास एक में। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ सिलेबस में से देख के। हाँ जी, हाँ जी।
चलिए आप स्टूडेंट्स अपना नाम प्लीज़ मुझे बता दें, और मुझे एक व्हाट्सअप कर देना प्लीज़, आप जो भी सिलेबस रह गया है ना, तो मुझे लिख करके व्हाट्सअप कर देना कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। सर तो एक डाययूरेटिक और एक डायूरेटिक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक। कौन सा? एंटागोनिस्ट, विच एंटागोनिस्ट? सर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक, ओके, 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 कोलिनर्जिक। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज अजय। Ajay, okay, okay. So Ajay, you write the topics, and you say, can you send me the WhatsApp? यस सर श्योर। Yeah, please, please. Okay. After the class, you can send me the WhatsApp. Okay. And so today we are let us start with you can say the topic introductions of organic compound, or you can say nomenclature of organic compound, and that would be is very important. So students, we will try to cover up the basic fundamental part of chemistry, because in your syllabus the organic chemistry as well as the medicinal chemistry, that is in combined in the pharmaceutical chemistry second. So first of all, because you have covered almost all syllabus of your subject, and I hope your examination will be started very soon. Can you tell me the tentative time period or date for examination? Have you any idea? नो सर। Okay, how many sessions have been completed? Sessional examination? टू सेशंस। Two sessions completed. One is left. Okay. यस सर। Okay. Your annual system, na? It's annual, यस सर यस। not semester. Annual system. Good. Yeah. So okay. So third sessional that we will be taken up the remaining part of the topics or syllabus that we will cover. Students, chemistry is very fundamental part or fundamental subject, and very interesting. You have to be understood the things at the basic level, at the root level. If you are able, definitely you can perform very well. So as you know, the first slide that is here, before we start discuss our discussion, I want to tell you, and I want to ask you, basically you can say, what is organic compound? Who can tell me what is organic compound? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? Yes or no, please reply. Don't make any hesitations, because what happened in my class, I want a good introduction. Okay. सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। Okay, but this is not correct definition. Students, first let me clear, organic compound, the name you can say the definitions is hidden in their name. इसकी जो definition है उसके नाम में ही छुपी है. Organic compound means the compound which are made up with the carbon. That is very simple definitions. जो भी कंपाउंड कार्बन से बने हैं, that is called as organic compound. Okay. So inorganic compounds, opposite the definitions, that compound which are made up other than carbon, that is inorganic.
made up with the carbon, that is organic. Okay, and did you know the carbon is the element that is present in universe in abundant, most abundant element you can say. And it is basically you can say carbon that having the 6 atomic can say number, and 12 atomic weight. And configurations, as we know, 1s2 2s2 2p2 in the ground state, and carbon having 4 valency and can form 4 covalent bond with other atoms. So start we can say simple compound that is made up with the carbon is the methane. That is you can say uh, CH4. yes, ch4. So the methane, that can be you can say you draw the structure for methane, that and in what happen in the methane. Okay, carbon attached with the 4 hydrogen atoms by single bond. So the alkane, that is the compound which are made up with the single bonded with the hydrogen or carbon. So there are the not no any double bond, single bond. And the simplest alkane, that is called as hydrocarbons, because hydrocarbons are made up with the carbon and hydrogen. So the hydrocarbons, that may be used in the fuel, solvent, lubricant, like fuel, like LPG, like can say other part like coal, and you can say other part of fueling, petroleum and all are called as hydrocarbons. So low level, you can say low number of the carbon, low number carbon hydrocarbons, they are made basically used as a fuel, solvent. That is list is there over here. So this is the students list for hydrocarbons. First member of alkane, that is the methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. There is number of the carbon start from 1 to 10. And the prefix will be the eth, meth, prop, but, and suffix will be the n, basically for all A and E. So compound will be the methane, ethane, propane, butane, pentane accordingly. You know about, you have to go through in school level as well. So the formula that is here, the carbon, that is methane, ethane, propane, and students the red mark by putting in the red block, red box. Look at here, C4H10. Now C3SH8 means propane. It's okay, but from butane, what happened? Butane, that may be the isobutane, because the single carbon chain node, the branching also takes place. That is from branching starting with the from carbon number 4. Means butane may be present as a normal butane and isobutane. And in isobutane, what happened? There is a one carbon attached with the 3 carbon. Okay, 3 methyl groups. So this is the isobutane. This is isobutane. And similarly, the from the pentane, 5 member pentane, there is a 2 isomers like isobutane and isopentane, as well as neopentane, that may be there for. So this is you can say isopentane, and also the neopentane, that may be there. One carbon that is attached with the 4 carbons in the center. One carbon is attached with the 4 carbons, so neopentane. So pentane, isopentane, and neopentane. So students, this is the introduction part about the alkane that you know about the IPSC nomenclature system organic compound. What rules you have to follow, क्या क्या नियम आपको follow करने हैं. First,
फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन को फाइंड आउट करना है. सेकेंडली, नेम ऑल द एटम्स नॉट इन द लॉन्गर चेन इन एज ए ग्रुप. सो फाइंड आउट योर लॉन्गेस्ट चेन एंड नेम ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. ओके, सबसे पहले लंबी चेन फाइंड आउट करनी है, फिर सभी नंबर्स को कार्बन्स को नंबरिंग करनी है. देन नंबर ग्रुप्स फ्रॉम द एंड टू द कार्बन, द लॉन्गेस्ट टू द फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप से सबसे लास्ट ग्रुप तक जो है नंबरिंग करनी होगी. एंड लिस्ट मल्टीपल ग्रुप्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो भी ग्रुप हमारे पास रह जाते हैं रिमेनिंग, द लेफ्ट ग्रुप्स आर देयर that to be numbered alphabetically, that putting alphabetic like A, B, C, D. So the first member of the compound, look at here the pentane. There is 5-member ring, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. But at position number 2, secondly, there is a 5-member ring, but it's not pentane. It's, you can say, butane, because 4 number rings are there, and position number 2 there is the substitution by the methyl group. So it would be the one methyl group at position number 2. Okay, position number 2. But the longest chain, or you can say this, and the blow is not huge, because the smaller number 1 2 is the branching takes place 2. जो जहां ब्रांचिंग हो रही है 2 नंबर पे हो रही है, उसी को हम लेंगे. ये नीचे वाला जो 3 नंबर का है, नॉट दिस कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3 करेंगे, ये ब्रांचिंग को ज्यादा नंबर मिल रहा है, तो हमें लीस्ट नंबर मिलना चाहिए. ये हमारा कंडीशन था. तो 1 2 3 मीन्स 2 मिथाइल ब्यूटेन ही करेक्ट होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन करेक्ट नहीं होगा. सिमिलरली प्रोपेन. ओके, सो दिस इज प्रोपेन 1 2 3, एंड नंबर 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग है. सो डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. स्टूडेंट्स लेट मी नो, थिंक इज क्लियर. आपको समझ में आ रहा है ये आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम? मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे, बट मेरा एक रिवीजन है ये. प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आ रहा है. थोड़ा सा मैं हिंदी मिक्स करके चलूँ, इट्स ओके, और या पूरा कंप्लीटली इंग्लिश चलूँ, ये भी मुझे थोड़ा सा एडवाइस कर दीजिए, बिकॉज यू आर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. स्टूडेंट्स सर मिक्स ज्यादा बेटर है. मिक्स आपके मिक्स मोड में चलता है ना? यस सर. वेरी गुड. तो अभी आपका ठीक समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर. यस. ओके गुड. तो ये आपका आईपीएससी नोमेनक्लेचर सिस्टम हम जो देख रहे हैं, हमने अभी तक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैड सीन दैट नंबर ऑफ कार्बन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन मींस मीथेन, इथेन, प्रोपेन. वो तो 3 कार्बन की चेन है, लंबी हो गई. बट ब्यूटेन से जो है आपका ब्रांचिंग शुरू हो जाता है. तो ब्रांचिंग में नोमेनक्लेचर में हमने क्या दे रहे हैं, उस ब्रांचिंग को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. ठीक है, जैसे कि नंबर 2 कार्बन पे ब्रांचिंग है तो 2 उसमें मिलना चाहिए, 3 नहीं मिलना चाहिए, जो हमने देखा. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, या सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा. ऐसे ही ब्यूटेन में भी 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा. बट ब्यूटेन के बाद जो पेंटेन, जो 5 कार्बन शुरू होता है, वहां पे 2 ब्रांचिंग हो सकती हैं, तो डाई मिथाइल प्रोपेन हो सकता है. ऐसे ही ब्यूटेन में लुक एट हियर, ब्यूटेन द 4 कार्बन, बट आइसोब्यूटेन इज यू कैन से 4 कार्बन बट देयर इज द ब्रांचिंग एट पोजीशन नंबर 2. सो इसको क्या बोलेंगे हम, 2 मिथाइल प्रोपेन. पेंटेन में देखिए 5 मेंबर, जो एन पेंटेन है 5 मेंबर की कार्बन की चेन है, तो एन पेंटेन हो गया. बट जो रेड बॉक्स में है, बट देखिए इसमें 2 ब्रांचिंग और हो जाती है. या तो नंबर 2 पे देखिए, नंबर 1 2 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो उसमें ब्यूटेन नहीं. अभी नंबर इस कितना हो जाएगा, 4 नंबर कार्बन बच गए, 1 2 3 4. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर 2 हो, ब्रांचिंग जहां हो रही है नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप हो रहा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है यहाँ पर हो रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन. ऐसे ही आप यहाँ देखिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रांचिंग हो रही है 2 2 पोजीशन पे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. सो स्टूडेंट्स ये एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है जो आपने 12th लेवल पे पढ़ा होगा. आई होप अगेन आई रिवाइज्ड हियर. देखिए दूसरी बात, ये जो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जितने भी हैं, एक कार्बन से लेके मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, आइसोब्यूट, इनको हम वाई एल अगर ला देंगे तो ये आपका सफिक्स वाई एल लगते ही ये एबर्वेशन हो जाता है. मतलब इस ग्रुप को हम अगर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे अगर ये ग्रुप कहीं जुड़ा है तो उसको मिथाइल करके लिख देंगे, मिथ, ईथ, प्रोप, इस तरीके से, तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसको ब्रांचिंग ग्रुप बोलते हैं. ऐसे ही ये और बाकी ग्रुप हैं, आइसोब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल ग्रुप. ओके, जैसे फ्लोरीन अगर होगा तो फ्लोरो ग्रुप होगा, क्लोरीन होगा क्लोरो, बी आर होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो आइडो. ओके,
So these are the branching groups. Look at here, students. You know, the functional group. Functional groups क्या होते हैं? The functional groups are the I can say groups which have their characteristics, properties. Okay, some specific characteristic और unique properties. तो उस टाइप के ग्रुप्स ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स. जैसे मीथेन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है स्टूडेंट्स. अब ये रेड कलर का जो मैंने देखिए सारे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, फ्लोरो ग्रुप, नाइट क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप, आइडो, साइनो, थायो. देन तो ये जो डिफरेंट ग्रुप है, लाइक डिफरेंट ग्रुप्स जो है रेड कलर में जो हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? दे आर फंक्शनल ग्रुप्स. तो अगर ये मिथाइल ग्रुप के जुड़ जाएंगे तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एमीन, मिथाइल फ्लोराइड. ठीक है, ये तो इसको कॉमन नेम हो गए. मिथाइल हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट प्री, जो मिथाइल ग्रुप था CH3 उसको मिथाइल, उसको हमने प्रीफिक्स में ले लिया. ओके, अगर इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो क्या होगा? मिथेनॉल, देन इथेनॉल, देन हम कहेंगे एमिनोमिथेन या एमिनोइथेन. मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके पहले आ जाएगा फ्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन. ओके, सो द फंक्शनल ग्रुप जो है क्लोरोफ्रोमो ब्रोमो ये आपके पहले आ जाएंगे, और इथेन, मिथेन, प्रोपेन इस तरह से. आई थिंक ये आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम समझ में आया होगा. प्लीज एक बार कोई स्टूडेंट मुझे बता दें कि इतना आपको समझ में आया या नहीं. एनीवन? सर आ गया. वेरी गुड. सेकेंडली नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, लुक एट हियर व्हाट इज द अदर पॉइंट्स दैट मीथेन, ethane, methane, there is the groups that is present over here, and the methane, the structure is there also. And what happen? The cations means radicals. Cations means positive charge, radicals means जिसपे कोई चार्ज ना हो, मीन्स फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और एनाइन मीन्स जिसपे नेगेटिव चार्ज हो. तो इनके केटाइन, एनाइन और रेडिकल्स पार्ट भी बन जाते हैं, जिनको हम इस तरह से मिथाइल रेडिकल, मिथाइल केटाइन, मिथाइल एनाइन, मिथाइल रेडिकल, इथाइल केटाइन, इस तरह से हम इनको बोलते हैं, इस तरह से हम इनको जानते हैं. नेक्स्ट, प्रोपाइल कंपाउंड्स. सिमिलरली लाइक इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, दिस प्रोपाइल आल्सो. बस इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? वन डिफरेंस इज ओनली दैट there is where the functional group is present, that position should be given minimum number, and the number to be written in their IPC name. कि हमें क्या मतलब है कि हमें जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को हमें मिनिमम नंबर मिलना चाहिए. जैसे आप देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे है आपका प्रोपाइल अल्कोहल 1 प्रोपेनॉल. तो एक नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने एक नंबर दे दिया, एक नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 प्रोपेनॉल. ठीक है, इसी के सामने देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2 प्रोपेनॉल, मतलब 2 पोजीशन पे ओल है. तो हमने ओल क्यों दिया? क्योंकि अल्कोहल के लिए सब जो आपका सफिक्स है वो क्या होता है? ओल, पोल. ओके, प्रीफिक्स क्या है? वो अल्कोहल. ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, एंड वो होता है ओल. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें जो है एब्रिविएशन यूज करना होता है. कॉमन नेम में जो है एल्काइल ग्रुप को एब्रिविएट कर देते हैं, आईपीसी नेम में आपका फंक्शनल ग्रुप जो है एब्रिविएट हो जाता है. सबसे पहले प्रीफिक्स लग जाता है जिसको हम फंक्शनल नंबरिंग काउंट करते हैं. ये इसका इंपॉर्टेंट थिंग्स है. ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, वन एग्जांपल इज देयर इज हेप्टेन. हेप्टेन द 7 कार्बन कंपाउंड. सो हेप्टेन हैव डिफरेंट आइसोमर्स. एक तो ओपन चेन कंपाउंड हो गया हेप्टेन, दूसरा साइक्लोपेंटेन, साइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, C7H14. सो दीज आर द डिफरेंट, कैन से ओपन चेन कंपाउंड में और रिंग कंपाउंड्स में दे आर, कैन से साइक्लोहेप्टेन और हेप्टेन बोथ आर आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन, यू कैन से. सो साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कि रिंग में होते हैं. 3 कार्बन रिंग से 3 कार्बन अगर आपस में जुड़े हो तो उनका रिंग बन सकता है, उनका एक साइकिल बन सकता है. तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोओक्टेन, सो अकॉर्डिंगली. एंड the abbreviation also cyclopropyl, if you are abbreviate it, it's you are take a pretty prefix, then cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane accordingly. So these are you can say numbering how you can say, only we have to put cyclo word before. जैसे कि आपका प्रोपेन है तो प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, तो साइक्लो रिंग में है तो भी 3 कार्बन ही है. लेकिन अगर वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन. अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो उसमें नंबरिंग लगाएंगे. जैसे 1 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो 1 2 साइक्लोप्रोपेन.
तो इसलिए साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो शब्द लगा देते हैं। बाकी क्या होता है आपका, जैसे प्रोपेन का, एथेन का, ब्यूटेन का ऐसे नोमेनक्लेचर होता है, वो नोमेनक्लेचर रहेगा, साइक्लो पहले लग जाएगा और वी हैव टू पुट देयर नंबरिंग पोजीशंस, नंबरिंग ऑफ द कंपाउंड एज वेल। Okay, so these are the cyclo compounds, the numbering also, that we are putting numbering at 1,2 dimethyl cyclopropane. Okay, so this is the numbering systems. Students, एक बार मुझे बताएं, are you able to understand the numbering system, IPC nomenclature of simple compounds, aliphatic Yes, compounds, sir. functional group containing compounds as well as the cyclo compounds? समझ में आ गया? Yes. देखिए दूसरा पार्ट है हमारा आज के टॉपिक का, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, because this is the basic fundamental part of medicinal chemistry or organic chemistry. You have to be write the IPC name of the compound, that is very important. Simple compound हो तो आप एल्केन, प्रोपेन, इथेन, एल्केन, एल्केन, एल्काइन की तरीके से दीजिए। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो आपका सफिक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ओल हो जाएगा, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक जो फंक्शनल ग्रुप की एक चेन है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हो तो ओइक एसिड जो लग जाएगा इसका सफिक्स लग जाएगा, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक ग्रुप की हायरार्की है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर इसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन होगा, एमिनो आपके फिर अल्कोहल्स होगा, और एमिनो ग्रुप्स होगा। इस तरीके से हायरार्की है जिसको हमें यूज करना है, उसी हायरार्की वाइज उसका नंबरिंग करना है, जो कि आपने स्कूल लेवल पे, 12th लेवल पे भी और अब यहाँ पे भी डिप्लोमा में भी आपने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर कैसे करता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिक नोमेनक्लेचर। अभी हमारे और मेडिसिनल केमिस्ट्री में व्हाट वी हैपन, वी आर फेसिंग द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बिकॉज वी हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द many compounds, many drugs. So how we can numbering them, how we can give the IPC name of the heterocyclic compound and organic compound or medicinal compound, that is important, that we have to know the nomenclature of heterocyclic compound. So first of all, what is the heterocyclic compound? Heterocyclic compound means any organic compound which contain at least one heteroatom in their nucleus, in their cycle. कि क्या मतलब हुआ, ये जैसे हमने देखा पहले ओपन चेन कंपाउंड देखा, एल्केन, प्रोपेन, जो है आपके एल्किन, एल्केन, एल्काइन। उसके बाद हमने एल्केन का ही साइक्लिक रिंग देखा हमने, साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। नाउ if you are putting any heteroatom in the cycloalkane, then what happen, it will be converted as a heteroatom, heterocyclic compound. So any cyclic ring, three member, you can cyclic ring start with the three carbon or three member of ring, and from the three member it will be infinitive. So if we are three member ring, then we can put the heteroatom. Heteroatom is atom other than carbon. Heteroatom is atom other than carbon, like nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus. These are the other than atoms. Okay, so if there is a nitrogen is there, then we have to put aja. For oxygen, oxa. For sulfur, thia. For phosphorus, the phosphor. For arsenic, for arsa. For silicon, the silica. So these are the different. So mostly the carbon, other than carbon, nitrogen, oxygen, and sulfur, they are mostly present in the compounds. Most abundant atoms that is present as heteroatoms. Okay. So and students, what happen things that number of the ring, the size of the ring is important in the nomenclature. So look at different rules, that how we can put the different rules and regulations for writing the IPC nomenclature system of heterocyclic compounds. Look at here, this is the important you can say table that we can remember. स्टूडेंट्स यहाँ पे रिंग, साइज रिंग, अगर 3 कार्बन से रिंग बनना शुरू होगा, 3 कार्बन, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन का रिंग है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 2 8 10, there is the ring. Okay, number of the atoms in the ring. So size of the ring is the 3 carbon ring. Then another thing, ring contain nitrogen, ring contain no nitrogen. Okay, so if the nitrogen is there, then or also the ring is the unsaturated or saturated. Saturated मतलब complete, there is no any double bond and triple bond, so that is saturated. If there is a double bond and any double bond or triple bond, then that would be called as unsaturated. तो अगर किसी भी रिंग में कोई नाइट्रोजन है, रिंग के अंदर रिंग है, 3 कार्बन की रिंग है, उसमें नाइट्रोजन है, तो और वो क्या है आपका आपका अनसेचुरेटेड है, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, इरिडीन। और अगर सेचुरेटेड है तो इरिडीन, इरिनीन और इरिडीन। सो इसमें डी का ये आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम इतना ये अगर टेबल आपको याद रहती है तो आप इस कंपाउंड को
आईपीसी नोमेनक्लेचर सिस्टम लिख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो इरेन और इरेन, इस तरीके से हमें सफिक्स और जो है एक तरीके से याद रखना पड़ता है और उसी हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ये एक स्लाइड है, आप इसको देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के साथ आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। Look at here, students. Uh, Saturated, unsaturated. I have told you three-member ring. This is the three-member ring. Nitrogen containing three-member ring. Okay. तीसरा member nitrogen है यहाँ पे. This is the nitrogen is there. So एजा और इरिडीन. So एजारिडीन. हमने ए निकल जाएगा और एजारिडीन इसका डाइपेशन नंबर कैसे बन जाएगा. सिमिलरली अगर सैचुरेटेड है, सॉरी अनसैचुरेटेड है तो क्या बोलेगा, एजा इरिडीन, इरीन, डी नहीं लगेगा क्योंकि हमने देखा था वहां पे क्या था प्रीफिक्स में। पहले देखिए, आप यहाँ देखिए, अगर ये इरीन होगा, अगर अनसेचुरेशन होगा डबल बॉन्ड, और अगर सेचुरेशन होगा तो इरिडीन। सो देखिए यहाँ पे क्या है, सेचुरेशन है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एजा रिडीन, और यहाँ पे सेचुरेशन डबल बॉन्ड आ गया तो एजारीन. ओके, सो दैट्स व्हाई we can give the nomenclature of the heterocyclic nucleus. Okay, similarly the ethyl oxygen, then oxyrane, then thiourane and thiorane. So these are the nitrogen. Okay, ना nitrogen के लिए एजास, oxygen के लिए oxa and sulfur के लिए thia. Okay, so that's why we can give the nomenclature of any compound, any heterocyclic compound. Students, please let me know आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया. Yes, Anyone? sir. It is okay. You can able to, I think you can write, if you are able to try, you will try your to making the nomenclature of heterocyclic compound ना, it will be definitely very easy and very इंटरेस्टिंग फॉर यू. ओके, और जैसे आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आने लग जाएगा तो आप कंपाउंड को स्ट्रक्चर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में किसी स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप समझते हैं देन इट वुड बी वेरी गुड टू यू. ओके, टू मेंबर, अगर दो ऑक्सीजन के एटम होंगे तो डाई लग जाएगा. ओके, दो नाइट्रोजन होंगे तो डाई एजा लग जाएगा, तो डाई ऑक्सीरेन, डाई एजीरेन. डाई मीन्स दो, एक्सा मीन्स दो, ऑक्सा के पहले लग गया दो ऑक्सीजन एटम है, एजा से पहले लग गया दो नाइट्रोजन एटम है. सिमिलरली द चार मेंबर कार्बन एटम है, उसमें हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है. देखिए यहाँ पे एजा है, एजा. अब इसमें क्या टीडीन लगा वहां पे, ठीक है, आप देखिएगा चार्ट जो मैंने बनाया था उसमें टीडीन था, तो एजिटिडीन. अगर अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन है तो एजिट, और ऑक्सीजन जा ऑक्सीटेन, ऑक्सीट. सो ये ऑक्सीजन थाया, सल्फर थाया, एजा, ये तो फिक्स रहेगा. और आपको सेचुरेशन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेचुरेशन है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सेचुरेशन अनसेचुरेशन है, ये देखना या नाइट्रोजन है या नहीं है, बस ये दो चीज देखना है और अपना नोमेनक्लेचर आप उसका लिख सकते हैं. स्टूडेंट्स, वो पहला जो स्लाइड था वो इंपॉर्टेंट था जो मैं बता चुका हूं आपको. ओके, सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. देखिए 5 मेंबर, देखिए पायरोलिडीन और पायरोल. पायरोल में क्या डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड, इसलिए पायरोल, एंड इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये पायरोलिडीन. ओके, and oxygen containing, this is the tetrahydrofuran and this is the dihydrofuran, because tetrahydrofuran और इसे furan और dihydrofuran, दो हाइड्रोजन फ्री है, दो डबल बॉन्ड, इसलिए फ्यूरान. सल्फर, ये कॉमन नेम है इसके, फ्यूरान और ये डाइहाइड्रोफ्यूरान, ऐसे इसको लर्न करना है. दिस इज द पायरोल. ओके, ये थायोफिन, इसको थायोफिन बोलते हैं कॉमनली, डबल बॉन्ड कंटेनिंग, और ये डाइहाइड्रोथायोफिन. ओके, सो द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सीजन मीन्स, अगर अब देखिए दो एटम एक साथ भी आ सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सल्फर. सो व्हाट हैपन, वी हैव टू बी पुट बोथ एंड प्रीफिक्स, जो इनका एक सीक्वेंस होता है प्रीफिक्स, लाइक सल्फर विल कम फर्स्ट, सल्फर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ओके, यही इसका सीक्वेंस है. अगर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है तो पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन, थाया ऑक्सा, इस तरीके से. ओके, एंड अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो पहले ऑक्सीजन, सो ऑक्सा एजा, सो ऑक्सा एजालिडीन. ओके, सो दिस इज आइसोक्साइड एजालिडीन. सो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा. मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं बिकॉज इट वुड बी टफ फॉर अस. ओके, okay, leave it. I will take an example again. This is the 6 member pyridine and pyridine. This is piperidine. अनसेचुरेशन तो पाइपेरिडीन कहेंगे और सेचुरेटेड होगा उसको पायरिडीन कहेंगे. ऐसे ही पायरिलियम जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा और टेट्राहाइड्रोपायरॉन. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पायरिडीन और पाइपेरिडीन है. पायरिडीन जो है वो कंप्लीटली डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, सेचुरेटेड है, और पाइपेरिडीन जो है वो अनसेचुरेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, और पायरिडीन जो है कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है. ओके, सो नेक्स्ट लुक एट हियर स्टूडेंट्स, अनदर एग्जांपल्स.
of 7-member heterocyclic compounds. Okay. Look at here. The two atoms if the present the ring, like 1,4-diazine, 1,3-diazine, 1,3-oxazole, and 1,3,4-dioxazole. Okay, so these are can say numbering also start with the oxygen, because oxygen is the can say first group and prior group. So 1 2 3, nitrogen will contain the 3. So 1 2 3 4. Okay, so this would be then by numbering we can say, and 1 position oxygen, 3 position nitrogen, 4 position nitrogen, so diaza. So 1 3 4 oxa diazole means this is a 5 members, so azole will be put all all 5 members all, and 6 member agene, diazine, and 1,4-diazine. Okay, so students, that is I think it's good for you, because not go in detail. हाँ बोलिए. सर एक स्लाइड को बैक करना सर. हाँ जी यही. सर जो लास्ट में ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है राइट साइड से, सर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 1 ऑक्सा 3 4 डाइजोल. हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऑक्सा डायाजोल, या 1 ऑक्सा 3 4 डायाजोल, ऐसा भी लिख सकते हैं आप. गुड, वेरी गुड. ठीक है सर. हाँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के लिए. ठीक है, अभी थोड़ा सा और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. दो रिंग अगर फ्यूज होती हैं तो क्या करते हैं. जैसे जो बेंजीन एक पायरिडीन, दो न्यूक्लियस फ्यूज हैं. ठीक है, पायरिडीन तो इसको बोलते हैं क्यूनोलिन न्यूक्लियस है ये आपका क्यूनोलिन. सो बेंजा बी पायरिडीन, बी क्यों दिया, क्योंकि ये दो ए बॉन्ड और बी बॉन्ड, ये सी बॉन्ड होता है, तो बी बॉन्ड दोनों में कॉमन है, इसलिए ब्रैकेट में बी दे दिया. तो ये कॉमनली ये यूज नहीं होता, नाम क्या यूज करते हैं, क्यूनोलिन. बट ये हेटेरोसाइक्लिक जो फ्यूज रिंग सिस्टम होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करने का सिस्टम है. यहाँ पे नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट था 1 2, यहाँ देखिए नाइट्रोजन से, यहाँ करेंगे नाइट्रोजन से स्टार्ट, यहाँ नंबर से नाइट्रोजन बनी है, नाइट्रोजन 2 नंबर पे जाएगा यहाँ पे. तो ये क्या हो गया, ये बी कार्बन हो गया, ये सी कार्बन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, बेंजो सी पायरिडीन आइसोक्विनोलिन. सो क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड इंडोल, ये जो है क्या है, फ्यूज रिंग सिस्टम है. बेंजीन के साथ पायरिडीन फिक्स है, बेंजीन के साथ पायरिडीन, लेकिन उसका आइसोक्विनोलिन मींस उसका बॉन्ड है वो सी बॉन्ड फिक्स है, जुड़ा हुआ है, बी बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ. ठीक है, तो इसलिए आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन एंड इंडोल. इंडोल में क्या है, पायरोल जो है वो बी बॉन्ड के साथ जो है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है. So these are the important things in the fuse ring systems. So that's all for you can say for your informations. Okay, so these are the different examples of the drugs that we are not going to discuss in detail, because one by one chapter you can read these things. There is furan containing nitrofuran, ranitidine, furosemide, and furoxamine. Pyrrole, that is tolmetine, and pyrrolidine. Example is paracetam and ethoxamide. Thiophene, there is pyrental and ketotiphene. So similarly, these are the number of the examples that contain the different types of heterocyclic nucleus, and that contain different types of structures of the compounds, means drug molecules. So one by one, you will discuss in your syllabus how we can numbering them, how we can understood them. Okay. So students, now let me know from your side any things you want to ask. Please let me ask. पूछिए आप लोगों को जो पूछना है. मैंने आपको नोमेनक्लेचर सिस्टम, ऑर्गेनिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक्सप्लेन करने की समझने की समझाने की कोशिश की. आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए प्लीज. सर आ गया समझ में आ गया सभी को. यस सर. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग ज्वाइनिंग मी. एंड दूसरी क्लास में हम जो है अब आपका रिमेनिंग पार्ट जो है टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे. एक मैंने स्टूडेंट को बोला जरा व्हाट्सअप करेगा मुझे, नेम तो मैं भूल गया, तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं उसी हिसाब से टॉपिक रेडी करेंगे और हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो बी सेफ एंड पढ़िए, आप अपना स्टडी करिए. सर आप अटेंडेंस कैसे लाओगे, स्क्रीनशॉट? हाँ, अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले ली है, उसके थ्रू मैं कर दूंगा. और अब अगली बार से थोड़ा सा आपका जो लिंक जनरेशन का ऑप्शन रहता है, मैं अगली बार से इसको कोशिश करूंगा अगली बार से इसको यूज कर सकूं. ओके, ओके, थैंक यू सर. थैंक यू.